जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। Yes, dear students, today we are going to start our poem number 6, A Sindhi Woman, by Jane Stalworthy, a great poet. This poem gives us a glimpse into the prevalent circumstances of the third world countries, where women, due to the very compelling circumstances, have to go through a very traumatic life. They have to face the hardships and tribulations with a stoic heart, valiantly, bravely. They take into stride the very problems of their day-to-day life to support their families, where they have to confront with the leery and lachrymose eyes of men around. But they have to keep moving, to keep the ball from the doors, to keep the ball rolling, to keep the pot boiling. Because they have to come out to earn, they have to face the leery and lachrymose eyes of the men around. तो ये डियर स्टूडेंट्स, आ सिंधी वमेन, जैन स्टैलवर्दी की ये पोइम, जो इसके अंदर कराची की जो स्लम एरियाज़ हैं उनकी डिपिक्शन कर रहे हैं। यूँ कह लें कि ये ओरिएंटल एनवायरनमेंट की डिपिक्शन है। यहाँ ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, बड़ी ट्रॉमेटिक लाइफ गुजार रही होती हैं बाज़ ख़वातीन। जब उनके जो मर्द हैं वो उन्हें छोड़ देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं, तो उन्हें बच्चों को पालने के लिए निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सख्त काम करने पड़ते हैं, और ऐसे में उन्हें बड़े नाखुशगवार किस्म के हालात का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्हें चलते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रुक जाती हैं तो उनकी ज़िंदगी यूँ कह लें रुक जाएगी, क्योंकि उन्हें मेहनत करना है अपने उन बच्चों को पालने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। तो यूँ कह लें कि शी इज़ अ मैन, शी इज़ अ मैन। अगर इसका वन लाइनर दूँ तो शी इज़ अ मैन। तो फिर ऐसे हालात में औरत को मर्दों की तरह बाहर निकल कर काम करना पड़ता है, irrespective of the lusty and leery eyes of the men around. तो ये डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें काम की अज़मत है कि लोग
इन नामसाद हालात के बावजूद भी बड़ी खूबसूरती से अपना काम अंजाम देती हैं। पर्टिकुलरली अ वेमेन who is under the trauma of divorce by her cruel husband. Barefoot through the bazaar and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. This stanza depicts a Sindhi woman. She is passing through the bazaar of the Sindh barefooted on a wave-like motion. The veil of her shyness is blown away by the naughty winds of the time. Despite the problems of her path, she keeps on moving smoothly. She has to face the adverse circumstances valiantly, bravely, and manly. She is carrying a stone jar on her head. That stone jar is a symbol of her burdens of life, which she has to carry to keep the pot boiling, to keep the wolf from the doors. She is wave-like in her motion. Yes, dignity has no price. Dignity has no price. तो डियर स्टूडेंट्स, खूबसूरत मंजरकशी है ओरिएंटल वेमेन की इस स्टैंजा में, जो नंगे पांव बाज़ार में से गुज़र रही है एक वेव लाइक मोशन के ऊपर, और ज़माने की नटखट हवाएं उसकी हया का, शर्म का पल्लू छीन लेती हैं। ये सोच कर के गम के ख़रीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाज़ार आ गए। तो वो सर के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाए चलती जा रही है, और उसकी चाल गोया जैसे कोई वेवलेट हो, कोई लहर हो। There is a beauty in her gait. Yes, dignity has no price. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, undulant grace, undulant means wave like motion, और glide means move along smoothly, और रिपल होता है डियर स्टूडेंट्स वेवलेट, स्मॉल वेव, और ट्रेड है वॉक, WALK. So let's move towards the next one. Watching her cross erect stone, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi slums, I with my stoop reflect they stand more straight who learn to walk beneath a weight. This stanza depicts the very difficulties, tribulations, hardships, problems faced by the Sindhi women. She keeps on moving on pointed stony paths which are scattered with litter, human and animal waste and broken pieces of glass in the poor areas of Karachi. These birds, garbage, excrement and crumbs of glass, they are symbols of
the leery and lachrous looks of the men around she has to bear. She has to bear with. The poet who has got a figure bending forward comes to think that the people who know how to carry the burdens of life stand erect and straight. Yes, the path towards glory never runs smooth. Yes, difficult roads often lead to a beautiful destination. A coward dies many times before his death. A valiant dies but once. By William Shakespeare. तो नोकीले पथरीले रास्तों के ऊपर आप देखेंगे कि वो चलती जा रही है, जहाँ कूड़ा करकट, गंद और टूटे हुए शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उन कराची की कच्ची बस्तियों में शायर जिसका जिस्म आगे को झुका हुआ है, जिसका जिस्म झुक गया है, और वो सोचता है कि वही लोग पूरे कद के साथ खड़े हैं जो ज़िंदगी के बोझ उठाकर जीना जानते हैं। Smilingly. Yes, burdens when cheerfully borne become light. Dear students, burdens when cheerfully borne become light. तो इसमें erect means straight. Garbage है rubbish. Excrement human or animal wastes. Crumbs, pieces. Slums means poor areas, unprivileged areas. और beneath, dear students, under, नीचे। तो ये है हमारा सेकंड स्टैंजा। इस नज़म का आखिरी स्टैंजा। एक्सरसाइजेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द मिसिंग राइमिंग वर्ड्स इन ईच वर्स हाई ऑन हर हेड एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट। और इसका डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो पीडीएफ में भी वैसे भी नोट्स आपको दिए गए उनमें से कर लें। चूज़ द करेक्ट आंसर। द वेमेन इन द पोइम वॉज पासिंग थ्रू द बाजार। शी वॉज कैरिंग अ स्टोन jar on her head. Those who carry weight stands straight. Her walk was smooth. जी dear students, that's it for the poem number 6. I'm pretty sanguine and hopeful that you people have understood this poem as well. Thank you very much. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला हम ये सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। और ग्रामर के लिए भी मेरे लेक्चर सारे इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। किसी भी हिस्से की ग्रामर आपको चाहिए तो वह यहाँ पड़ी हुई है, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर क्रिएटिव राइटिंग एंड अमेलियोरेशन इन योर ग्रामर लर्निंग एज वेल। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।